So last time we met, we were talking about uh, Islam at Crossroads, written by Asad. So we finished at the point where he said that we would have to define general role of religion in human life. हमको इसको define करना हमारे लिए ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि हमको देखना है कि जो हमें eat my noodles कह रहा है वेस्ट, वो इज इट इन सिंक विद आवर ओन एस्पिरेशंस, आवर ओन गोल्स? हमारा दीन उसके साथ कहीं तजाद में तो नहीं है? आर दीज वेव्स एडिंग टू ईच अदर और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ईच अदर? इनका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? राइट? तो उसके लिए इन्होंने बोला पहले हमको देखना पड़ेगा कि we will have to define general role of religion in human life. We'll have to analyze that. So he starts by saying what we call the religious attitude is the natural outcome of a man's intellectual and biological constitution. ये religious attitude किस चीज़ को कह रहे हैं? ये इंसान के intellectual और biological constitution का एक natural outcome है. The atheists would disagree, you can understand that. The theist says this कि ये natural है. Muslims in particular, Islam is deen of fitrat. So that's what he is saying. Why is he saying so? Classical theist arguments. Insan unable है to explain to himself the mystery of life. Is that true? We can say by and large, yes. Maybe I'm biased, maybe I'm not, but life presents a mystery. There are questions that are unanswerable. The mystery of birth and death, the mystery of infinity and eternity, all of these mysteries. And his reasoning stops before impregnable walls. Dead end. But is that true? Is there a dead end? Yes, there is a dead end. But how can we know there is a dead end? This is a very interesting question. You will have to think about it. Can we ever know there is a dead end? That's what we have to think about first. Why is that an interesting question? That's an interesting question because when we reach it, we would be able to say, okay, इससे आगे हम जा नहीं पा रहे, जा ही नहीं सकते. ये फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी को भी डिटरमिन करना पड़ेगा. ये दो अलग चीजें होगी. ठीक, वी हैव हिट द डेड एंड ऑफ द रोड. ठीक, इससे आगे नहीं जा सकते, आगे पहाड़ है. ठीक, ये लेकिन फॉर एवर के लिए कहना ये फ्यूचर में भी ऐसा होगा, ये कहना लगभग इम्पॉसिबल है. राइट? कि फ्यूचर में भी नहीं कर सकते हम इसको ट्रांसफर. टर्न्स आउट philosophers have given sophisticated arguments to say that certain things are impossible, even in future. They are logically impossible. For example, Kant argues things in themselves can never be known. आसान भाषा में कि we can only know how things appear to us. आसान भाषा में. So bottle appears yellow to us. Okay, we say bottle is yellow. But is bottle yellow? Is it yellow? We would never know. We only know how it appears to us. So he says we only have access to the phenomenal world. We would never have access. It's not possible to have access to the nominal world. There are other examples that can be given. Incompleteness theorem, for example, tells us a system. कोई भी system 100% complete हो नहीं सकता इन आसान भाषा. Something would be missing. कुछ ना कुछ missing होगा. और वो हमको कैसे पता चलता है कि जब सेल्फ रेफरेंस स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनमें मसाइल पैदा हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अ स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स और ट्रू? That's an interesting question to which we would not have a good answer. So Gödel worked on things like these and reached to his incompleteness theorem. We are trying to throw in some big terminology so that the session appears sophisticated. So otherwise what we are saying is there are limitations to things we can do, logical limitation. Or say, let's say in physics. In physics, we used to call him Hassan Mama, Heisenberg. So Heisenberg's principle, there is something called a Heisenberg's principle. His principle states that it's impossible to determine the position and velocity of subatomic particles
with 100% certainty. He gives that's called the uncertainty principle, and he gives the level of uncertainty. When you know one thing for 100%, you would not know the other thing. And to know future trajectory of something, you need to know both. किसी भी कोई, suppose a ball is moving in a particular direction at 10 kilometers per hour speed. It started at a particular point. You can say कि 10 मिनट बाद ये कहाँ पे होगी. But Heisenberg is saying for subatomic particles, if you know the velocity, you cannot know the position. If you know the position, you cannot know the velocity. With 100% certainty, you can, of course, approximate them. So that's at least one thing we cannot know, right, in physics. And then there are many more things जो limits लगा देते हैं, like you cannot travel faster than the speed of light. And these limits are interesting. So, time started with Big Bang, but what happened Big Bang? Conceptually, it's impossible to think of it. And the physics हमसे कहते हैं time started with Big Bang. Everything started with Big Bang. But what was there before Big Bang? क्योंकि conceptually time को start और stop करना possible नहीं है. And that's why Kant used to think, he would argue that time does not exist outside, it exists in the mind. It's a conceptual category that we apply to things. Here, Muhammad Asad is saying that man is unable to explain the mysteries of life, mysteries of birth. But is he talking about these mysteries that I told you? He is not. He is actually not talking about that. This, when philosophers, religious philosophers or theists are saying all of these mysteries, they are not talking about Heisenberg's uncertainty principle. He might probably not even have known it. उस वक्त तक आ चुका था when he is writing Heisenberg's principle. शायद कर्ट गोडल का भी incompleteness theorem आ चुकी थी, but I'm not certain. But what is he talking about? He is talking about the concept of kulliya. We would not know the sum total of all things. We would know individual things, but the sum total of all things. Why? Now that makes sense as well, because we are within the system. To see how whole system works, you should be outside it and look at it. लेकिन अब उसके सिस्टम के अंदर ही हैं. You are always manipulating the data. खैर, he can therefore do two things. अब जब हम let's for the sake of argument just end it. कि okay, decide हो गया, there are certain things we cannot do. Impregnable walls, mysteries of life are unsolvable. अब उसके पास दो तरीके हैं. First is give up all attempts to understand life as a totality. Life as a totality. This is very interesting. और ये जो है ना, इसके बारे में करते हैं. लेट्स सी पहले ये क्या कहते हैं. इस केस में इंसान अपने एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस पे रिलाई करेगा एंड विल लिमिट हिज कंक्लूजन टू आवर एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस. दैट्स ऑल. इंसान ऐसा करेगा. ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सिंगल फ्रैगमेंट्स ऑफ लाइफ. इंडिविजुअल चीज़ों को वो एक्सप्लेन कर पाएगा कि दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस. व्हाई डिड द बिलियर्ड्स बॉल मूव? बिकॉज इट वाज हिट बाय अनदर बॉल. Why did the ball move towards the boundary line? Because the batsman pulled it or cut it through the point wala section, right? Why did the person fall? Because he stumbled. Aise, individual. But the sum total of why is there anything at all? The sum total of all, he cannot know. He would, usko wo discuss nahi karega. And what would this do? This would increase in number and clarity as rapidly or slowly as human knowledge of natural sciences increases or decreases. तो ये इंडिविजुअल चीज़ों का इल्म भी उसका वैसे ही बढ़ेगा जितना साइंसेस बढ़ेंगी. जितना फिजिक्स तरक्की करेगा उतना ही इन चीज़ों का इल्म हमारा तरक्की करेगा. But will nonetheless always remain only fragments. The grasp of the totality itself remains beyond the methodical equipment of human reason. Sum total के बारे में आर्ग्यू करना is not possible for human reason. Now this is sophisticated philosophy here. ये जो कह रहे हैं ये प्रॉपर फिलॉसफी में स्टडी किया जाता है कि सम टोटल के बारे में बात करना. और ये जो ये मेथड है ये नेचुरल साइंसेस का मेथड है. ये किया है नेचुरल साइंस ने, यही किया है. इन्होंने कहा ना दो तरीके हैं अब हमारे पास. एक, हम गिव अप ही कर दे इस पे. नेचुरल साइंसेस ने गिव अप कर दिया है सम टोटल ऑफ ऑल पे डिस्कस करना. फिलोसॉफिकली ये फिर से कांट ने ही किया. कांट ने सम टोटल कॉस्मोस को डाल दिया किसमें? नॉमिना में. सम टोटल ऑफ ऑल इज नॉमिना. उसके बारे में बात करना बेवकूफ़ी. यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट. उसके बारे में इल्म हासिल नहीं किया जा सकता. कांट ने ये किया.
तो कांट के बाद मेटाफिजिक्स डाइड. Philosophers, some would disagree. जो metaphysics कर रहे हैं, of course they would disagree कि no, Kant was not able to kill it. But we see some trends after Kant which show clearly that philosophy died in the West after Kant. What are those trends? Superficially we can say पहले तो philosophy ने linguistic turn लिया. Philosophers क्या करने लगे? Language को analyze करने लगे. Linguistic philosophers, Bertrand Russell, Wittgenstein, etc. कहने का मतलब उन्होंने कहा कि ये जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, व्हाट इज़ देयर एंड ऑल, ये सारा एक्चुअली लोचा लिंग्विस्टिक है. ये लैंग्वेज में मसाइल है, ये असली में मसाइल ही नहीं है. सो वी वुड हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. तो लिंग्विस्टिक फिलोसफर, लिंग्विस्टिक टर्न. और दूसरा एग्जिस्टेंशियल एंड साइकोलॉजिकल एंड फेनोमेनोलॉजिकल टर्न लिया. उसमें वो वाले फिलोसफर्स आए, उन्होंने बोला कि ह्यूमन लाइफ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पहले ह्यूमन लाइफ है, फिर वो बाकी सब है. तो दे स्टार्टेड ह्यूमन एग्जिस्टेंस को सेंटर स्टेज देना. सो काइंड ऑफ मेटाफिजिक्स से फिलॉसफी दूर होने लगी. और यही टाइम था नेचुरल साइंसेस की फिलॉसफी बढ़ने लगी. वियना सर्कल, लॉजिकल पॉजिटिविज्म एट्सेट्रा. साइंस का फलसफा भी इसी पे खड़ा हुआ. तो काइंड ऑफ द सम टोटल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एट दिस पॉइंट इज दिस, अगर एक सेंटेंस में इसको सम अप करें कांट के बाद, कि मेटाफिजिक्स या तो हम कर नहीं सकते या होता ही नहीं है. In any case, we are not going there. Then what are we doing? We are going to concentrate on physics, not metaphysics. We are going to concentrate on what is here, जो हमारे सामने है. And for that, we have developed a principle, verification का method, falsification principle, etc., etc. And we are going to do science. That's wave one he is talking about. Now, has anyone adopted wave one? Yes, the Western civilization has adopted. What is the other possibility? ये कहते हैं the other possibility which may well exist side by side with the scientific one. ये क्यों कह रहे हैं ये which may well exist? Because the second possibility can be contradictory to the first, right? ऐसा भी तो हो सकता है कि the second possibility does not allow first possibility to remain. But ऐसा भी हो सकता है second possibility में first भी included है कि दोनों चीज़ें कर लेंगे. तो ये कह रहे हैं कि the other possibility which may well exist side by side with the scientific one is the way of religion. दूसरा क्या है? रिलीजन का रास्ता. ये इंसान को इनर, वो क्या कह रहा है आउटर, ये कह रहा है इनर पे ध्यान दो, मोस्टली इंट्यूटिव एक्सपीरियंस पे, ताकि वो एक्सेप्ट करे एक यूनिटरी एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइक, एक सम टोटल यूनिटरी. ये यूनिटरी भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है यहाँ पे, तौहीद. बिकॉज ह्यूमंस ट्राई टू यूनिफाई. हमारे अंदर ही टेंडेंसी होती है. वी सी एन इंडिविजुअल कैट, we say cat, we unify all cats in the category of cat. we are people who unify. हम तौहीदिफाई करते हैं हर चीज़ को. So we have this internal kind of attraction towards unitary explanations, generally on the assumption that there exists a supreme creative power. अब क्यों है कहीं पे बादल फटना और हमारी खुशी या गम, या मून एंड स्टार्स, या फिर पानी समंदर, या फिर खाना पीना, इनका रिलेशन क्या है आपस में? वी हैव वन सिंगल क्रिएटर गॉड जिसका हर एक के साथ लिंक है, एवरीथिंग. सो if something is happening in the universe where we do not know it, it is still part of that plan. So it's a grand picture that we see. So God governs this universe according to some preconceived plan above and beyond human understanding. As has just been said, this conception does not necessarily preclude man from investigating facts and fragments of life as offer themselves for external observation. Now this he is repeating again. ये साइंस ने किया है, इसको कहते हैं ओवरटर्न विंडो का शिफ्ट होना. So for example, what does that mean? Say there is there are different kind of opinions that can be had about a particular thing. You can have one kind of extreme, totally against it, favor ये opinion, totally in favor वाला
opinions, so they are on two extreme sides, and then there are बीच में 100 different shades of opinions that you can have in favor, but not during nights. So another one, we in favor almost all day except at 12 p.m. ठीक, so more favor, less favor, 100% in favor and 0% in favor. Overton window is what are acceptable opinions in the public place. Public place में accepted opinions कौन सी विंडो में आते हैं? देयर आर सर्टन थिंग्स यू कैन नॉट से इन इंडिया, राइट? बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे आपकी फैमिली के अंदर बहुत सारी वोकेबलरी आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज है जिनके अंदर वो वोकेबलरी यूज़ होती है, राइट? सो वहाँ की ओवरटर्न विंडो थोड़ा सा लेफ्ट है, आपके यहाँ की थोड़ी सी राइट है, किसी की और राइट है, दैट्स ओवरटर्न विंडो. जैसे हिंदुस्तान में इस वक्त काफ़ी सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो अनथिंकेबल थे 15 साल पहले कोई यूज़ करेगा, एटलीस्ट ऑन द कॉमनल फ्रंट. No one would have thought that these statements can be uttered in India. So Overton window has shifted. Now these statements are accepted. These are not. तो पहले वो Overton window से बाहर थे. So what's the relevance of what I'm saying here? The relevance is कि रिलीजन राज करता था पूरी दुनिया पे. एक पोप ने बात बोल दी, अगर नहीं माना तो खलास. Burn him. The Pope was like that. And religious persecution has taken place of scientists across the world in different forms. कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा. West में dark ages में. So if you would have an opinion contrary to the Bible, God save you. So it was very difficult to say at that time. अब इनका टाइम आते आते इनको ये कहना पड़ रहा है कि साइंस और मज़हब एक साथ भी रह सकते हैं. इनसे 200 साल पहले क्या साइंस करे जा रहे हो, मारो इसको, एक साथ क्या रहेंगे, हम रहेंगे बस. यू वुड हैव टू वर्क अंडर अस. ठीक, तो दिस इज अ शिफ्टिंग ऑफ ओवरटन विंडो, ये आप देख सकते हैं. तो इस वक्त कितना डिफिकल्ट है ये कहना कि वी डोंट नीड साइंस, राइट, वी नीड टू गो बैक टू रिलीजन, है ना? डिफिकल्ट है कहना. एवरीवन वुड बी लाइक ये कौन सी सोच है, पुरानी सोच है. सो ओवरटन विंडो हैज शिफ्टेड अ लॉट. खैर, he says, this conception does not necessarily preclude man from doing science. There is no inherent antagonism between external and internal perception. I personally have begun to disagree with it. There are fundamental differences between internal and external. Internal है, external उसका opposite है, dude. ये पहले ही opposite है दो. Internal, external. Internal is spiritual, external is material. Since when have material and spiritual been same? Material की quality total opposite है, spirit की quality total opposite है. तो spirit कहता है do it, material कहता है don't do it, don't take the risk. So spirit wants to protect, material wants to destroy. I think they are two opposites, and it's only religion that can give them वो balance, उनको balance कर सकता है. So inherent antagonism मेरे हिसाब से है, but I think I agree with what he is saying. What he is trying to say उसको भी तो समझे, वो क्या कहना चाह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं. Yes, काफ़ी हद तक हो सकती है. You can be rich and you can be spiritually sound, right? You can have good food and you can be healthy as well, spiritually healthy, I mean. So you can do great science and you can be a good human being. Once again, spiritually, I mean. So that is possible, but your material wealth is always going to pull you against your spirit, and your spirit is always going to ask you against your. So there's a balance, and that's why namaz is a physical act as well. Namaz is a physical act, and there's a psychological and spiritual act in it as well. Both acts are happening at the same time. So I think there's an antagonism, but there's a balance that can be. और उस बैलेंस में they are going to work in tandem. I don't know, maybe it's not, but it's something we can think about. But the latter is in fact the only speculative possibility to conceive all life as a unity of essence and motive. अब लेकिन रिलीजन को क्या कह रहे हैं, रिलीजन के पास एक प्लस पॉइंट है
कि ये इसके पास टूल्स हैं जो सम टोटल ऑफ लाइफ को एड्रेस कर सकता है, इन शॉर्ट एज अ वेल बैलेंस्ड एंड हार्मोनियस टोटलिटी। यही मैंने शायद 1 मिनट पहले आपको बोला कि रिलीजन इसको बैलेंस कर लेता है। अदरवाइज मुझे इनहेरेंट एंटेगनिज्म दोनों में दिखती है। दौलत कहती है कि क्यों देना है ज़कात, स्प्रिट कहता है ज़कात दो, स्प्रिट कहता है ज़कात दो, कहता है और दौलत बनाओ, स्प्रिट कहता है कि नहीं एनफ है। ठीक, तो दौलत कहता है खुद को प्रेज करो, बहुत मेहनत की है तुमने, स्प्रिट कहता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें ये मौका मिला। सो आई थिंक देयर इज एंटेगनिज्म, बट हु नोज। द टर्म हार्मोनियस दो सो टेरिबली मिसयूज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कनेक्शन। अच्छा, ये शायद अब हार्मोनियस को भी एक्सप्लेन करने लगे, बिकॉज इट एम्प्लॉयज ए कॉरस्पॉन्डिंग एटीट्यूड इन ह्यूमन हिमसेल्फ। रिलीजियस मैन वो जानता है कि जो भी उसके साथ होता है, जो भी उसके अंदर होता है, ये ब्लाइंड फोर्सेस का नतीजा नहीं है, ये विदाउट कॉन्शियसनेस और पर्पस नहीं है जो उसके साथ हो रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अल्लाह ताला कुरान में एक बहुत खूबसूरत आर्गुमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि दोज हु डिनाई मी, उनसे अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुमने खुद को खुद बनाया? डिड यू क्रिएट योरसेल्फ और डिड यू कम आउट ऑफ नथिंग? ये rhetorical questions है। And what's God trying to tell us? That from nothing comes. He needs something from which something would come out. And that has own उसकी अपनी philosophical problems है, but let's not go there. And second, God is kind of making that वो ना वो irony kind of thing कि तुमने खुद को खुद बनाया. How can you make yourself? वो एक contradiction है, because for you to make yourself, you have to be first. So you cannot make yourself. So the only possibility remains you have come out of nothing. But that possibility is also gone. So within these two questions, God is saying, कि आ जाओ वापस अब अपने रास्ते पे. So that's what he is hinting to, probably. He is saying कि religious इंसान को पता होता है कि ऐसे ही नहीं हो रहा है. And this is one of the central themes in Quran, I think. God often talks about it. In the sense that God says that your soul is a witness. तुम्हारी सोल तुमको बता देती है कि ये गलत है, वो सही है, या आखिरत होने वाली है, ये तमाम चीज़ें. There is something inside us that tells us things do not have purpose, and God calls these things as witness in Quran. कि do you not see these heavens, these stars? Is this without purpose? God says that I don't do things without purpose. So everything has a purpose. And the interesting thing about human psychology is that we associate things with purpose. No, it's a fact that we know for sure now. There are certain kind of experiments. I wouldn't call them experiments. Studies is a better word. बच्चों की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की गई थी. बच्चे एसोसिएट पर्पस एंड एजेंसी टू थिंग्स. जैसे फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन वेर शोड दीज पॉइंटेड रॉक्स. ओपन मैदान में देयर आर पॉइंटेड रॉक्स. सो व्हाई आर दे हियर? बच्चों से कहा गया ये पॉइंटेड रॉक्स यहाँ पे क्यों है. मटीरियलिस्ट एक्सप्लेनेशन वुड हैव बीन कि वेदरिंग हुई है या किसी ने इसको तराशा है, इसीलिए ये पॉइंटेड है, राइट? दैट्स व्हाई दे आर देयर. बच्चे गिव आंसर्स दैट दे आर फॉर एनिमल्स टू स्क्रैच देयर बैक्स. सो व्हाट डिड दे डू? दे एसोसिएटेड purpose to it. I just give you one example. More examples can be given. Paul Bloom का research paper इस पे बड़ा interesting है. Religion is natural. That is, religion is natural to humans. It's not something we acquire. Atheism is something we acquire. Religion is a state of being जो हमारी है. That's not an argument for religion though. That's also interesting. Religion is natural, yet it's not an argument for, because evolution kind of messes everything up. You can say कि evolution की वजह से we are like this, कि religion is natural to us. Survival of the fittest. Those who believed in religion, they kind of survived. So it's very interesting. Both these sides trying to win. And finally at the end of the day, what I have come to realize is, when you put these arguments both on one side or another, and if you use pure rationality, you might not reach a conclusion. And again, Kant was of this opinion when he talked about antinomies, and he would say that दोनों side के लिए equally arguments दिए जा सकते हैं, plausible arguments. तो
then why am I a believer? Right? Say for example, if I am saying for the sake of argument कि atheism और theism के लिए argument same है, same 100%, then how do I decide which one to choose? And that's also very interesting क्योंकि philosophy में एक experiment है, thought experiment, कि if a donkey is kept equidistant from two haystacks, it would die of hunger because it would not be able to decide which one to take. So there has to be some difference between the two so that you decide, right? So RM here is a philosopher of religion. He says there is something, his theory is called blick theory. He says there's a blick inside humans. Blick is, I don't know what. ये एक सोफिस्टिकेटेड टर्म है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का जिसको हम नहीं समझते कि इंसान के अंदर कुछ है जिसको वो ब्लिक कहते हैं, जिससे वो डिसाइड कर लेते हैं. सो देयर इज एन इंटरनल टेंडेंसी इन ह्यूमंस टू लैंड ऑन दिस साइड और दैट साइड. सो इट्स आवर ब्लिक because of which we are theists or because we are atheists. Now, from our perspective, can that be plausible? It can be कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कुछ डाल रखा है जिसकी वजह से हम या तो इधर लैंड करते हैं तो उधर लैंड करते हैं, and that's why our souls rest in the hands of Allah, and that's why Allah guides whosoever He wills, etc. So Allah places the blicks wherever He wants. So that's that. So what's he trying to say is that humans, they know it that जो भी होगा उनके साथ, उनकी consciousness के साथ, सबके साथ कुछ purpose है. He believes it to be the outcome of God's conscious will. जो भी हो रहा है अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा है, and therefore organically integrated with a universal plan. इसकी वजह से वो universal plan के साथ associated होता है. कोई unrelated event है, US में कोई event हुई, we are here in, say you are there in Saudi Arabia, someone is there in China and all. What is the relation? You might say no relation at all, right? But okay, there can still be relations. कि इसका भी कुछ ना कुछ होगा. जो भी होता है अल्लाह ताला की मर्जी से होता है कि Allah has a plan. So something in it would be there. So there is a link. In this way, man is enabled to solve the bitter antagonism between his self and the world. क्योंकि अल्लाह ताला ही मेरे सेल्फ को भी गवर्न कर रहे हैं और बाहर की दुनिया को भी कर रहे हैं. और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मर्ज दीज टू वर्ल्ड्स ऑफ थॉट एंड मैटर. ये इम्पॉसिबल है. how are you able to move your hand? Your hand is physical matter, right? This is physical matter, carbon, etc. But your thought is not physical. You think of moving your hand. How can something non-physical move something physical? So there is a ghost in the machine. It's just moving it. आपको किसी चीज को भी मोशन इम्पार्ट करना पड़ता है, फिजिकली करना पड़ता है ना. सो इफ यू हैव टू मूव अ बॉल, यू हैव टू टच इट. यू कैन नॉट विल इट. उसको बड़े आप गुस्से से देख रहे हैं, मूव हो जाए एंड इट्स मूविंग. दैट डजंट हैपन, राइट? But how are you able to move your hand? Turns out it's one of the problems philosophy was not able to answer. Philosophers have not been able to give good answers. Rene Descartes suffered with it the most. Other philosophers tried, जैसे Leibniz tried to say pre-established harmony, कि they cannot interact, it's not possible. But जो thought आपका emerge होता है उसी वक्त God has already kept it in your hand that it would move. And you think because of your thought the hand moved. It's just happening parallelly. Pre-established harmony है हर चीज़ों के बीच में. Spinoza gave another kind of answer. We're not going there. And this is one more way of kind of दोनों में link दिखाने का कि God is doing both the things. So when you will, God wills your hand to move. You will that you think of your hand to move. God wills that, okay, let hand move. If God wills, hand would not move. So that's God is that postulate which links the two things. So what were we saying? We were saying that ये करके human self और बाहर की दुनिया के बीच में हम एक balance कर पाते हैं. The human being, with all the integrate mechanism of his soul, with all his desires and fears, his feelings and his speculative uncertainties, sees himself faced by a nature in which bounty and cruelty, danger and security are mixed in a wondrous and inexplicable way, and apparently work on lines entirely different from the methods and the structures of mind. Dil कहता है peace,
बाहर क्या है? केओस। दिल कहता है लाओ, बाहर लाओ एंड हेट। दिल कहता है जस्टिस, बाहर अनजस्ट दुनिया। तो जो बाहर की खूबसूरती और बदसूरती है, दिल हमारा कुछ और चाहता है। तो इसमें बैलेंस कैसे लाएं? Never has purely intellectual philosophy or experimental science been able to solve this conflict. मेरा दिल जस्टिस चाहता है, मेरे अंदर एक साइकोलॉजिकल नेसेसिटी है, जैसे ये कि मौत, मौत मौत इज ड्रेडफुल. Now think about it. If all that happens to you is you're gone out of existence, wow, nothing of you remains. Gone. कुछ नहीं होगा. तो what is there to live for? Why is there anything to live for? There's nothing to live for. And in fact, it's the ironical thing about it is that you should not be afraid of death then, because once you die, khatam, khalas, everything. ना कोई दर्द है उसके बाद, ना कुछ. You're gone out of existence. तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, इसको नहीं कर पाते सॉल्व. दिस एग्जैक्टली इज द पॉइंट वेयर रिलीजन कम्स इन. पीके में भी वही आर्ग्यूमेंट देते हैं ना पीके को, कि रिलीजन गिव्स अस होप. रिलीजन, वो जो मिसिंग पजल का जो मिसिंग पार्ट है, वो रिलीजन सप्लाई करता है. विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट टाइम विल मीट, we will continue further inshallah. If you have anything to say, ask it, so please do that.